A very good afternoon to all of you. My name is Ashwini Kumar Kota, and on behalf of my company XLPro, I welcome you all to this webinar today on 360 virtual tours at jewelry retail stores, what, why, and how. Over the next 30 minutes of this webinar, I am going to discuss few important details about 360 virtual tours. That is, what are 360 virtual tours, the types of 360 virtual tours available in the market today, and why are these tours important for jewelry retail stores like yours? Why are they so important and why are they so relevant in today's context? And finally, we look at some innovative ways in which you can use 360 virtual tours at your jewelry stores. When I say at your jewelry store, while we have maybe thousands of jewelry stores in the country today, every jewelry store is unique. So one strategy doesn't fit all. So we look at few strategies, few common contexts, and we'll see what is relevant for you and what is not relevant for you. As I proceed through this webinar, I'll be focusing on three important parts. One is the technology, of course, which we're talking. Second is the business context in terms of your customers, your store, your strategy, your dynamics. And third is, of course, the human psyche or the psychology, which is the buyer psychology and the seller psychology, your salespeople, how they interact with their customers, and of course, the customer psyche. First and foremost, when we say virtual tours, it's important to understand what are virtual tours and what are not virtual tours. By definition, as Wikipedia says it, a virtual tour is a simulation of an existing location, usually composed of a sequence of videos, still images, or 360-degree images, usually. It may also use other multimedia elements such as sound effects, music, narration, text, and floor map, and what else and what not. So what it means eventually is as long as you're getting a virtual experience of a real situation, like you got a store over there at your place, you're there right now. If I can experience your store sitting here using whatever I can use, it could be 360 images, it could be videos, models, this and that. I'm getting a virtual tour of your store. That's why it's a virtual tour. I'm not there yet, I'm experiencing it. So predominantly a virtual tour is a panoramic interactive representation. That's how I would like to take it forward. Panoramas are, as you know, are uninterrupted views of a place. You stand on top of Eiffel Tower, you can say, I got a panoramic view of Paris. It's beautiful. Why? Because you can just turn around your head and see the entire Paris as you want it. Similarly, if I get a panoramic 360 view of your place, interactive, I can click, drag, drop, touch, do whatever I want in the physical of a physical space that lets me explore it as if I was in person. The main difference is I'm not there, yet I can experience it here. That is a virtual tour. How I use it, how much I make sense of it, and how much of it is relevant to a business, that's the story which will unfold in the next 20 odd minutes. So, when we say virtual tours, all tours are not the same. With evolving technology, options increasing, predominantly in today's world, there are four different categories of virtual tours you can choose from. The first ones are 360-degree virtual tours, the ones I'm talking about. The 360-degree virtual tours, as the name says, they use multiple 360-degree photographs that are clicked and connected together. You can have videos also embedded. So basically, suppose I come to your store with a camera, a 360 camera. I shoot various panoramic shots. I link them up, put some hotspots over there, give some clickable options. I create an experience. So what am I doing? I'm shooting various elements of your space, bringing it together, and I'm creating experience. The experience is built by 360 panoramic shots as well as a combination of videos and interactivity. That's one way of doing it. A second one is a 3D model based virtual tours. So what is 3D model based virtual tours? I'm not taking the real photographs, but I'm scanning your entire place. So you might have heard a company called Matterport. There are a few more companies, and Matterport is the most popular one. So what you do is you bring a Matterport camera over there. You run the scanner, the camera scans your place, put in various locations. It scans the whole place, and then it puts all the scans together and creates a beautiful 3D model of your store. It's called a dollhouse because it looks like a dollhouse. You can rotate up and down, see, etc. What is so unique about the 3D model is it is built to scale. So every measurement within the 3D model is proportionate to an exact measurement. There's no stereoscopic or monoscopic or looking nearer, farther, up and down. No, what is. Usually, when you have architectural models or you're talking about buildings or physical spaces where physical dimensions are important, 3D models are used. Pros and cons, yes, 3D models are a little costly. That aside, in 3D models, the interactivity is limited. You cannot give as much interactivity as you would do in the 360 virtual tours. You cannot embed videos inside them, as like 360 videos cannot be embedded inside them. And of course,
If you want to make some changes, like for example, you've changed the facade of your the front of your store, or you change a section, with 360 images, you can change one image and then the whole thing changes. But with scanning, you have to scan the entire thing once again. Different purposes, different ways of doing things for different reasons. Nothing right or wrong, they're just different. The third one is video-based virtual tours. So what are video-based virtual tours? These are tours which are less interactive or non-interactive, but they use a lot of 360 videos shot and stitched together. And these clips are shot at a location with some activities happening. Like suppose you're celebrating a trunk show or a festival at your place, and you shoot the entire thing as a 360 experience, and the person visualizing it or seeing it, experiencing it, gets to feel as if the person is a part of it while all the action is happening around them. You might have come across a lot of 360 based virtual tour videos on YouTube. You can go to YouTube, click on 360 videos, and then you can experience them directly, or you can experience them using a VR headset. So there you are a passive spectator. You're there watching what's happening. Somebody's climbing Mount Everest, somebody's paragliding. You're doing it with them, but from your chair at your desk. Last one, the digitally created environment-based tours. Now, these tours comprise of 3D environments. Now, how are the different 3D models? The models are of a real place that you've got. Environment is your imagination. If you say, okay, I'm imagining my store is on moon, so it shall be done. So what we do, we create a moon environment, put your store out there, or maybe put something else out there for you. So here, everything is about imagination. How you see mostly in 3D video games, imagination. So if you want to create an imaginative experience, surreal, out of the world experience for your customers that you've created out of your own thoughts, we can use softwares like Unity, SimLab, Blender. There are a lot of softwares out there which help us create these out of the world experiences which have got nothing to do with reality, but they are also a tool of your imagination. That is doable. So these are 4 ways available today using which any one of them you can create a virtual tour. But you can create a tour, but how is your customer going to experience it? You have all the technology to create. You can do whatever you want. I mean, you are God out there when it comes to your store and its experience. But how can your target audience access your virtual tour? That makes a lot of difference in terms of what you're creating, how they're experiencing. The first and foremost thing is when we create virtual tours for your organization, or most companies do, they'll give you a web link or an app or a standalone file. Web link, app, or standalone file. Either of them you can use, which can be used one using a VR standalone headset like Meta Quest or one of those ones. So what are standalone headsets? You can put the file into the headset and the headset will play it for you. Or it's also called head mounted device, or HMDs. So you can have a nice virtual reality experience of a place. Second, you can also use mobile device based headsets. You might have seen Google Cardboard. You also know of Irusu, etc. Very economical headsets, but you have to put a mobile phone inside it. The Google Cardboard software is used, and happily you can use the headset to experience your file, or in this case, your store experience. The third one is without any VR experience, a person can use a mobile smartphone or a tablet with gyro. When it's a gyro, it's very simple. You move your phone and the screen changes with the direction. You move left and you get a left view, go right, right view, and you can see the whole thing by just shifting the phone left and right, up and down, etc. So the phone captures the physical space of your image, the 360 panorama, and shows only that section which you should be seeing. On the contrary, if you don't have a gyro, you can use the fingers to swipe left, right, up, down, and experience it. That's also possible. And finally, of course, our good old desktop or laptop. You open your file on the laptop, use your mouse or your finger to, in case you got touchscreen, go left, right, etc. And you can always experience it. So what I'm saying is, from a highly immersive VR experience to a typical vanilla desktop laptop, everything is possible through which a person can experience the virtual tour. So accessibility per se is not a problem, but choosing how the person accesses it is a call you'll take. I'll come to that in the next slide, or next few slides. But another more important thing is, if you are looking at the Western world and India also, Google is pretty active, and Google Street View is pretty common, and Google My Business is common too. You can also link your 360 virtual tour to Google Street View and to Google My Business. So if somebody is looking up your store in Google, they can always go there, click onto it, walk into your store, explore things, etc. That's possible. This is a beautiful world of virtual tours where your store is no longer physically in location. It is available in every VR, desktop, mobile, everywhere, at the click or the choice of the customer.
That is how this wonderful, beautiful world comes up. Now it's left to you in terms of how you want to make the best out of it. So, as I was talking of VR devices, laptops, tablets, mobiles, etc., a very important thing to look at is the same virtual tour, the same 360 virtual tour, same file, same link can provide different experiences when experienced with different devices. It's all based upon the level of immersiveness. When I say immersiveness, you might have heard of immersive technologies, VR, AR, MR, XR, etc. Let's not worry about the jargon. They are not as complicated as they sound to be. First thing is if you put on a VR headset, a mobile driven headset or a standalone headset, doesn't matter. You put on a VR headset, what are you doing? You're covering your eyes, you get into a different world. Your ears are covered with headphones, so you might be hearing the sounds. So I'm seeing what you are showing me, I'm hearing what you're making me hear. And of course, I'm standing in my own place, sitting at my desk. So my touch and sense are different, but I can get an experience, a visual experience of as I'm standing inside your store and hear the sounds of your store. Or if you're talking to me, I can hear you talking to me. If you recorded your voice or if you're present in that video, that's possible. That's the highest level of immersiveness possible. So if you want to give a very personalized experience, it's experienced through higher immersive device like a VR headset. The second one is a tablet or a smartphone. Like I said, you can use a gyro experience, maybe not as wonderful as a VR device, but you get to see left, right, center, etc. Or the last, of course, there is no immersion. You get to see it in front of you. Okay, ऐसा होता है, ये है, ठीक है, देख लिया. So instead of a 2D, I'm seeing 3D, but I'm making a choice. I see what view at what point of time. It's completely left onto me. So you need to keep in mind that there are three levels of immersions which a customer can experience your file through at any point of time. Sometimes the choice is yours if the experience is in store, but in most cases the choice is the clients or the visitors, because they will depend upon what device they have in front of them and what is the level of access. So now that we know how many types of virtual tours are there and how many ways your customers or people can experience them, why should you consider 360 virtual tours? The two facts are clear in front of you, but why should you consider a 360 virtual tour for your store? Definitely it has to do something to with business. It's important that it adds value to you. Let's understand it in the right perspective. Now, 360 virtual tours gives customers the choice. They give a choice to look around and choose the view they want to see in the moment. Now, this is an extremely loaded, heavy element of this particular webinar today. Why? Because everything today is all about a choice. किसका choice है? आपका choice है कि उनका choice है? If you are showing a jewelry to a person, if you put up a nice big hoarding, it's your choice. आप डिसाइड करते हो होर्डिंग पे कौन सी ज्वेलरी जाएगी, कौन सा मॉडल जाएगा, क्या फॉन्ट जाएगा. द कस्टमर इज पैसिव. ठीक है, मैं होर्डिंग देख लिया, 10 बार देख लिया, ओके, you're a great guy, I come to buy from you. That's where the world has been working for God knows how many decades. But today customer says, ठीक है, you got everything, but it's my choice what I see, when I see, and how I see it. We use word consume, how I consume, what I consume, when I consume. So when you put your entire world out there, complete 360 world, the customer feels, okay, अब मुझे दाएं वाला showcase देखना है, बाएं showcase देखना है, journey देखना है, ये देखना है. I'm absolutely free. And the very fact that the choice is in my hands and your entire world is at my fingertips or controllers, the customer feels powerful, and with that power comes a lot of bonding. I'm one with you. That's the psychological element here. They make the choice by turning a head, using a gyro, or even swapping a laptop. It doesn't matter how they make a choice or how immersive they are. They automatically form a bond with you. They connect with you. The customers want to feel in control and make the choice. That in control and make the choice is a very important element of a human buying psychology, which we're emphasizing right now. And if you're using 360 virtual tours, do not just create a tour, website पे डाल दिया, चमत्कार हो जाएगा, ये सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ. It's not that. Are you appealing to the thought process of your customers? Are you helping them feel in control, be one with you? आप मेरी दुनिया में आपका ही स्टोर है, महसूस कीजिए. आप बोलते हो ये बात, तो अब वो बात बिना बोले, बिना वहां रहे भी उसे महसूस किया जा सकता है. So, कैसे किया जा सकता है? There are four elements which are a part of this whole virtual tours, what we call as features. The first feature is, as I spoke earlier, you make it immersive. Immersive. Users can look around from any angle, giving them a sense of presence and immersion. That's it. आप उनको immersion का मौका दे रहे हैं. We may believe ठीक है, headsets are not there. It's not like that. A typical economical budget headset costs what, $1,500 approximately, maybe even cheaper than that.
मोबाइल फोन डालिए, देख लीजिए, दैट्स एज सिंपल एज इट. सो वी शुड नॉट इमेजिन कि कस्टमर नहीं करेगा. वो करना चाहे तो क्या आपका स्टोर अवेलेबल है उनके पास. मेनी पीपल हैव ऑकुलस डिवाइस, मेटा डिवाइस आल्सो. Second is accessible. 360 virtual tours can be viewed on any VR headset, computer, tablet, mobile. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, it can be accessed from any device, which means whatever device they're accessing it, your tour can be there for them. Third is interactive. The amount of interactivity you can give by rollover, click, slide, or swipe, you can do a lot of interactivity and give your 3D models, videos, audio. So आपके स्टोर में मैं अभी आया, इमेजिन कीजिए, I walk into your store, somebody greets me, meets me, makes me sit in the chair, मुझे ज्वेलरी दिखाएंगे, वो तो रियल हो गया. बट वर्चुअल में रियल के बाद 4 कदम आगे जा सकते हैं. आपका हिस्ट्री, आपका एक्सपीरियंस, आपके रिकॉर्डेड वीडियोस, आपके 3D मॉडल्स. मैं ज्वेलरी पीस देख रहा हूँ, उस पीस का 3D मॉडल कैन बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ मी. आई लव द मॉडल. You can also show me a complete virtual tour of the manufacturing experience. So suppose you specialize in say polki jewelry. All of us know what is polki jewelry. How many of us know how it's made? So उसका पूरा manufacturing process, कैसे sourcing होती है, designing कैसे होता है, entire thing. So I am making a very informed, experienced buying without you making any effort, and I bond with you at a deeper level and not at the piece level. And that is possible if you use the combinations strategically. डंपिंग नहीं करना है. आपने बोला मैंने वर्चुअल टूर कर लिया, मैंने स्टोर लगा दिया, चलो सब कुछ डाल देते हैं. सब कुछ डाल देने से खिचड़ी पक जाती है, कुछ नहीं होता है. तो सब कुछ नहीं डालना है. हर चीज को ऐसे देना है कि कस्टमर को महसूस करते हुए आगे बढ़ना आपके साथ. कोई पीस देख रहे हैं, उसका स्टोरी समझ रहे हैं, उसका कैड मॉडल समझ रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग समझ रहे हैं, पर उन्हीं पीसेस का जिनका समझने की जरूरत है. क्योंकि 10,000 पीसेस शोरूम में सबके लिए नहीं करना है. तो एक्सपीरियंस कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ओवरडूइंग इट. तो आपको ये भी जानना है कि ये कैसे ओवरडू नहीं करना है. नेक्स्ट वन, नेविगेबल. Users can move around and experience the virtual space at their own pace. The last 4 words, at their own pace, ये बहुत जरूरी है. क्यों? Because this is what defines the choice of the customer. You're not telling them कि हाँ पे दाएं जाइए, बाइये जाइए, लेफ्ट में खड़ा हो जाइए. No, nobody wants to be guided now. People just waltz in. क्या ये पॉसिबल है आपके स्टोर में? शायद हाँ, बट मोस्टली ना. कस्टमर वॉक्स इन, द पर्सन कांट जस्ट वॉक अराउंड. म्यूजियम नहीं है, पर वर्चुअल टूर में म्यूजियम है. आपने इतना खूबसूरत स्टोर बनाया हुआ है. आई वॉक इन वेर एवर आई वॉन्ट, सी द होल थिंग. आपने 4 माले का स्टोर बनाया हुआ है. आई सी ऑल द सेक्शंस. आई एम कंप्लीटली इमर्स्ड एंड एक्सपीरियंस कंप्लीटली विदाउट डिस्टर्बिंग यू और द स्टॉक और अदर कस्टमर्स. हाउ ब्यूटीफुल कैन इट बी. और ये पूरा महसूस करके मैंने रियली वॉक इनटू स्टोर, आई एम रेडी टू बाय, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर चुका हूं. और जितना आपने खर्चा किया है, टाइम स्पेंड किया है, तक खूबसूरत बढ़िया आलिशान स्टोर बनाने के लिए, वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कंप्लीटली without even bothering you. That is the beauty of the ability to navigate. Because यहाँ पे walk through options होते हैं, clickable options होते हैं, बहुत सारे options होते हैं. You can easily go wherever you want and experience it. ये 4 points together make a virtual tour totally worth the experience you provide to the customer. Next step is, ये सब तो ठीक है, but what do you provide? What can you use a 360 virtual tour for? When I say for, I don't mean of course for business, but for क्या करके बिजनेस लेके आना है. स्टेप 1, और बिफोर इवन आई गो टू स्टेप 1, लेट मी से स्टेप 0. कोई चीज ज्यादा पसंद आई तो उस पर छलांग नहीं मारना चाहिए. वी ऑलवेज फॉल फ्लैट. सो वर्चुअल टूर सबको लगता है करना है, डोंट लीप ऑन टू इट एंड ट्राई टू डू एवरीथिंग ओवरनाइट. आराम से स्टेप बाय स्टेप, द वर्ल्ड विल वेट, कोई कहीं जाने वाला नहीं है. यू हैव टू स्मूथली ग्रो इनटू इट. सबसे पहले क्रिएट ए वर्चुअल टूर एंड स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट थिंग यू प्रोवाइड इज इंफॉर्मेशन. हाउ योर स्टोर लुक्स. कुछ नहीं करना है, आपके शॉर्ट से काफी है. टाइप्स ऑफ ज्वेलरी स्पेशलाइज इन, योर हिस्ट्री, आपके बारे में, क्योंकि ऑल ऑफ यू देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. आपके काफी लोग इतने पुराने स्टोर्स से, इतने हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं. आई एम रीडिंग अबाउट सम ऑफ यू. मुगलों के जमाने का स्टोर्स कंटिन्यूस चले आ रहे हैं. व्हाट कुड बी मोर ब्यूटीफुल देन दैट? सम स्टोर्स हैव गॉट सच रिच हिस्ट्री. सम हैव गॉट सम ब्यूटीफुल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज. एवरीबॉडी हैज गॉट समथिंग नाइस और ग्रेट. सो क्या लुक की बात है, क्या ज्वेलरी की बात है, क्या हिस्ट्री की बात है, किसकी बात है? तो एनी इंफॉर्मेशन विच डिफाइंस यू एंड मेक्स यू फील स्पेशल, उसको हम यूज करेंगे वर्चुअल टूर में. मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, यूज करेंगे, मैंने ये बोला डालेंगे. डालना मतलब डंप करना, यूज करना मतलब एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करना. वहां से हम शुरू करते हैं. नेक्स्ट होता है नेविगेशन. इफ यू गॉट अ स्टोर विच इज बिग और स्पेशल और सेक्शन, जैसे कि आपको यहाँ जाके इस चीज को महसूस करना है, तो वॉक थ्रू आप क्रिएट करेंगे वहां पे, ताकि
the customer can go through all the places, experience it before even coming to the store. Already महसूस किया the store में आके novelty नहीं है. Then the person start experiencing jewelry and you, क्योंकि store तो वो experience कर चुके हैं. लास्ट ये दो लेवल क्रॉस करके आप थर्ड लेवल पे आएंगे, एक्सपीरियंस. You go beyond the obvious and you can create a theme, create activities, create your story and journey in an experiential way. And उसके आगे जाके, as I spoke about things earlier, imaginary experiences. तो यहाँ पे आप कैंपेन सेट कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं. You go beyond the obvious, क्योंकि आपने वर्चुअल टूर बनाया, एक बार लगे हाँ ठीक है अच्छी बात है देख लिया, बट नेक्स्ट टाइम व्हाट इज स्पेशल? The specialty is that tour can change every few months by including more activities, more experiences, more stuff like that. आपके यहाँ कुछ trunk shows हो रहे हैं, कुछ events हो रहे हैं, कुछ celebs आ रहे हैं, whatever you're doing, they can be created or converted to newer and newer experiences to blend into your virtual tours. Virtual tour is not a static thing कि बना के डाल दिया. It's like आपका store dynamic है, क्योंकि नई बातें होती रहती है, वो सारी नई बातें virtual tours पे भी चलती रहती हैं. This how information, navigation, experience. Start with one, smoothly grow into the experience, so eventually we enjoy being in the experience. Q, because experience creates emotions, emotions bond and products sell. Simple. ये बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, because आपका day in and day out your life depends on it, because आप emotional product sell कर रहे हो. Jewelry is all about emotion. It's not about gold bars being sold. So emotions bond, तो आपका bond form emotion से होता है. Jewelry तो बिकना ही बिकना है, क्योंकि bond इतना strong होता है. All of you who are jewelers for quite some time, ये बात आप अच्छे से जानते हो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, because emotional attachment to customer is the biggest investment you can make and the best you can get out of any relationship. So यहां तक की जो बात है ये थी the tactical and factual way. Now let's look at some innovative ways to use 360 virtual tools to enhance customer experience and maximize business for your jewelry store. So what are some innovative ways? अब तो बहुत कुछ करते हैं, unlimited ways of using virtual tours. But because हमारे यहाँ जो टारगेट सेगमेंट होता है, कस्टमर बेस कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में आता है. मैंने भी काफी एक्सपीरियंस किए थे पहले विद ज्वेलरी स्टोर. सो आई पुट अक्रॉस अ फ्यू सेगमेंट्स जो कि कॉमनली एक्सपीरियंस होते हैं. लेट्स लुक एट देम. आपके यहाँ कोई यूनिक एक्सपीरियंसेस है, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दैट आफ्टर द वेबिनार. सबसे पहले दिस होल chunk of customers who are NRIs and people from remote or remote visitors, people from remote locations, including tourists. ये लैंग्वेज आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है. इफ यू आर बेस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि आपका स्टोर अगर अमृतसर में है, लुधियाना में है, जयपुर में है, दोज आर बेस्ड इन अमृतसर लुधियाना नो वेरी वेल कि दिसंबर जनवरी आते आते NRI का इन्फ्लक्स आना शुरू होता है. दे ऑलवेज लव टू बाय फ्रॉम इंडिया. मनी अपार्ट, love and bond तो होता ही अपना. So a lot of business happens. Great. Those are based in Jaipur, जोधपुर, खासकर जयपुर. आप जानते हैं कि वहाँ के स्टोर्स में lot of foreign tourists come over there. उनका इंडिया का में एक अलग ही ओपिनियन होते हैं, and they want an experience, वो हवेली वाली experience, they want something in mind. And most of our jewelers in Jaipur, they deliver. And those of you not from Jaipur, if you visit any good jewelry store in Jaipur, आपको पता पड़ जाए कि what is the class experience. It's really wonderful. I'm not saying you don't give it, they're also giving it. एक टारगेट सेगमेंट है. आपके यहाँ भी लोग आते होंगे, पढ़ाते कैसे हैं? कोई इनको बता के लेके आता है या खुद चले आते हैं? We don't know. They're coming, it's great. But there's more to it. Imagine the people living in far away countries. वो आपका स्टोर को पहले महसूस कर पाते हैं, आपका माहौल महसूस कर पाते हैं. They get a first hand feel, they feel familiar, and familiarity builds trust, right? वो रियलिस्टिक फील महसूस करें, ये तो एक बार जाना ही, एक बार देखना ही. फोटो देख के बाद भी खुश हो जाता है. 360 virtual tour में तो वाह मजे आ गए. Then the person can schedule a visit, can even plan to spend more time as they already know what to expect. जो चीज को हम जानते हैं वहां पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऑलरेडी उसको और डीपली महसूस करना चाहते हैं. द पर्सन इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड योर वर्चुअल थिंग. यहाँ आके आपका हॉस्पिटैलिटी, आपका ज्वेलरी पीसेस, आपका द वे यू टेक केयर ऑफ योर staff, the whole world इसको महसूस कर पाते हैं. when they buy a piece of jewelry, experience तो पहले ही कर चुके हैं आपका माहौल का, personal touch के साथ they bond with you. That way your probability of getting more customers, the probability of converting customers and people coming with the intent to buy and less exploratory approach is quite high. This works. Second, for customers searching on Google, ये भी एक बहुत common बात है, because today we are all displaced. Like I live in Bangalore these days. I was in Mumbai earlier.
तो यहाँ पे क्या होता है कि वी गेट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, वो आए हैं यहाँ पे, रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, लाइफ चल रही है, बट दे आर डिस्प्लेस्ड। तो अचानक किसी को मन करता है, किसी को गिफ्ट करना है, या कोई किसी की शादी हुई है, कोई डेटिंग कर रहे हैं, कोई ज्वेलरी परचेस करना है, सीधा गूगल पे जाएंगे, स्टोर देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे, चले जाएंगे। दिस मोर टू इट ऑफ कोर्स, बट अगर वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, नॉट जस्ट स्ट्रीट व्यू बट इनसाइड व्यू एंड एक्सपीरियंस टू, और आपका स्टोर का स्ट्रीट व्यू है, स्टोर के अंदर का व्यू है, तो होता क्या है, गूगल पे सर्च करने के बाद आदमी को ब्रेक लगता है, अरे ये क्या है, देखता हूँ यहाँ पे। सो व्हेन यू सीइंग 10-12 स्टोर्स का इमेजेस एंड फोटोज एंड ज्वेलरी, अचानक एक के अंदर को वॉकिंग टूर मिल रहा है, एंड इट्स अ नाइस टूर बिकॉज आपको पता है अपने एक्सपीरियंस के लिए बनाया हुआ है, द पर्सन इंक्रीजेस स्टिकीनेस, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ऑटोमेटिकली गूगल के कान खड़े रहते हैं हमेशा। तो गूगल ने क्या किया, अच्छा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दिस सीम्स बी गुड, तो आपका एसईओ रैंकिंग में भी आपको इंप्रूवमेंट मिल जाती है, कस्टमर का इंटरेस्ट ही बढ़ जाता है, जहां हम ज्यादा ज्यादा वक्त बिताते हैं वहां ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या फिर सेकंड्स भी काउंट करते हैं, आपको तो पता ही है। तो and then eventually what happens, the probability of the customer walking into a store and feeling ये तो जगह मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ, तो automatically when you feel familiar, you feel comfortable, automatically the probability of bonding and buying becomes higher. So जहाँ पे हमको फेमिलियरिटी पहले से होती है, वो जगह हम अच्छे से इजीली बहुत कम टाइम पे बॉन्ड कर सकते हैं, इट हेल्प्स आउट along with of course एसईओ तो होता ही है। थर्ड, ये तो आप भी जानते हैं, एंटूराज ऑफ वॉक इन कस्टमर्स, ये तो अपने आप में कंप्लीट चैप्टर इन द सेल्स ट्रेनिंग व्हेन आई वाज डूइंग प्रोग्राम्स अर्लियर। इसके बारे में काफी कुछ हम लोग डिस्कस करते थे, बिकॉज यूजुअली जब कोई इंपॉर्टेंट बाइंग होती है, आजकल भी ऐसा होता है, पहले और ज्यादा होता था, कि शादियां होती है, जब बाइंग होती है, तो परचेज एक को करना है, साथ में 10 लोग आते हैं, बिकॉज फैमिली साथ में आती है, इंडिया रन्स ऑन फैमिलीज। बट होता है कि कभी भला करने के चक्कर में बुरा हो जाता है, द पर्सन्स वांट टू हेल्प आउट, बट हाइपर एंथुसियाज्म, ओवर एंथुसियाज्म करते करते कभी कभी सेल डैमेज भी हो सकती है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, इफ यू गॉट इंटरैक्टिव वीआर और टच स्क्रीन कियोस्क और टैबलेट्स आपके पास स्टोर में रखे हैं, तो जो बाकी जो अंटूराज आया हुआ है, दे कैन एक्सपीरियंस योर एंटायर स्टोर, व्हाट द की पीपल आर फोकसिंग ऑन लुकिंग एट द ज्वेलरी, दे आर ब्रॉट इन टू से यस और नो द राइट टाइम, बाकी टाइम पे दे आर एबल टू quench their curiosity, and you prevent them from interfering the sales knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally। बट होता यह है कि वो एक्सपीरियंस के बाद वो आपको और बेहतर महसूस कर पाते हैं, उनके मन में भी रिकॉल हायर रहता है, एंड दे फील दे पार्टिसिपेटेड, दे एंजॉय द एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी गोस विन विन। सो दिस इज वन मोर थिंग यू कैन यूज फॉर एंटूराजेस इनसाइड द स्टोर। तो गूगल यहाँ पे क्या है कि वर्चुअल टूर्स आर नॉट ओनली फॉर आउटसाइड द स्टोर, आपके स्टोर में आप कियोस्क डाल सकते हैं, टैबलेट्स रख सकते हैं, टैबलेट स्टैंड रख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कीप वीआर हेडसेट्स, इट कुड बी इकोनॉमिकल वंस, कॉस्टली वंस, मर्जी आपकी, स्टोर आपका है, बट द चॉइस इज आप कस्टमर्स को क्या पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, दोज आर कमिंग देयर अलोंग विद द बायर्स आल्सो, कभी फॉर्मेलिटी में ना पड़ जाता है, यू गॉट समथिंग फॉर देम, बट आई एम सेइंग कि द एडिशनल लोग जो आते हैं उनके लिए भी आप एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। टू टारगेट रिपीट परचेज, ये अपने आप में अगेन एक स्टोरी है, कि क्योंकि कस्टमर परचेज करके तो चला गया है, वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। नाउ 360 वीडियोस एंड पैनोरामास बेस्ड वर्चुअल टूर्स ऑफ एन इवेंट दे मिस्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। कस्टमर आपके यहाँ पे आया, परचेज के चले गया, अच्छा महसूस हुआ इसलिए परचेज किया, ज्वेलरी अच्छी मिल गई, प्राइस अच्छा मिल गया, पर आपका स्टोर सेम नहीं होता पूरे साल, वहाँ कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, ट्रंक शोज होते हैं, सेलेब्स आते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, इफ नथिंग एल्स कलेक्शंस प्रमोट करते हैं, या फिर कलेक्शंस चेंज होते हैं। So what is FOMO? FOMO is fear of missing out. The customer might be in your city, might be somewhere else. But if you ensure कि आपके स्टोर में कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसका वर्चुअल टूर के थ्रू आप हमेशा हमसे जुड़े हो, आप क्लिक करो, आप आज हमारे साथ हो। अभी अगले फ्यू डेज में गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणपति का काफी जगह पे फेस्टिवल्स होते हैं, काफी स्टोर्स में भी काफी कुछ एक्टिविटीज होते हैं, आगे दिवाली आने वाली है, शादी का सीजन आने वाला है, आप कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, उसका वर्चुअल टूर क्रिएट कर दिया आपने और आपने शेयर कर दिया, the people enjoy it, if nothing else 360 video share कर दिया आपने। So what happens, the people are connected with you post purchase, so they become a part of a community or a family. Is that not what you want from social media or your Instagram followers? Because digitally आप कर सकते हो, तो एक लिंक के इतने सारे होते हैं कि the person is not seeing you as outsider, the person is feeling you as one inside the store at that moment of time when the person is actually not there. So आप मेरे साथ नहीं हो, फिर भी मेरे साथ हो, that's the experience you are giving them. Referrals, ऑल गुड स्टोर्स नो कि मेजर बिजनेस आपका रेफरल से आता है, आपका किसी को अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, द पर्सन गोस एंड टॉक्स अबाउट इट, और इतना बढ़िया स्टोर है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट था, ओनर ने खुद मुझे अटेंड किया, ये सब लैंग्वेज आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ,
एंड ये सब करने के बाद अच्छा डिस्काउंट मिला, अच्छा कलेक्शन था, उन्होंने एक्सचेंज करके दिया, साइज कट करके दिया, ये सब तो आप करते हो। उसके आगे मोर इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी को इतनी बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। बट इमेजिन की जो सब कुछ तो बोल ही रहे हैं, साथ में देर एबल टू शेयर वन लिंक। एक लेडी अपने दोस्त को बोलती है लिंक देखो, महसूस करो कितना अच्छा शॉप है। वो लेडी महसूस करेगी, बाद में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस व्हेन शी इज एबल टू कम नियर योर स्टोर। वो आएगी, शी इज ऑलरेडी फीलिंग फेमिलियर अबाउट योर स्टोर बिफोर शी वॉक्स इन। वो ये नहीं बोले कि मेरे सहेली ने कहा था, वो ये बोले कि आपका वर्चुअल टूर देखा था, बहुत बढ़िया स्टोर है, थॉट लेट मी कम एंड स्टेप इन, स्पेंड सम टाइम विद यू। एंड द एक्सपीरियंस गोस बियॉन्ड वर्ड्स। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया फॉलोअर्स। कोविड सीजन के बाद, मैं सीजन वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज कोविड आया गया और सबकी दुनिया बदल गई, काफी लोगों का भला हुआ, काफी लोगों का अनफॉर्चुनेटली बुरा भी हुआ। बट मैंने एक बात नोटिस किया है कि सारे ज्वेलर्स डिजिटल हो गए उसके बाद। अर्लियर टू टॉक टू पीपल इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी कुछ ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग काम भी करता था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कनेक्ट ऑन डिजिटल स्पेस। एवरीबडी सेड कि लाइक हम फिजिकली बात करते हैं, फिजिकली काम करते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं। अब मैं देखता हूँ किसी भी अच्छे स्टोर का 50,000 60,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, कॉन्स्टेंटली ज्वेलरी इंस्टाग्राम पे डाली जा रही है, मतलब विच मींस व्हाट पीपल आर वेरी एक्टिव। ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल थिंग बिकॉज आपने नेक्स्ट जेन, जो जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जो भी जेन्स हैं, आपने कनेक्ट कर लिया, तो आप जमाने के साथ चल रहे हो एंड मे बी जमाने के आगे चल रहे हो। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई एम श्योर यू एंजॉयिंग इट टू। ना व्हाट एल्स, आपने इमेजेस तो डाल दिया, वो तब कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं? You can conduct 360 virtual tour based games like treasure hunt etc as part of a social media strategy. Now think out of the box. वही स्टोर आपका है वर्चुअल स्पेस में। आप ये तो इमेजिन नहीं कर सकते कि आपने अपने स्टोर में ट्रेजर हंट करे, सब भाग रहे हैं वहां पे, वो तो पॉसिबल नहीं है, ज्वेलरी स्टोर है, कांट इवन इमेजिन दैट। बट मोर इंपॉर्टेंटली वर्चुअल टूर में you can do whatever you want. Like for example, even example लिखा है, a मनगढ़ंत example है, just for imagination, not to mean any store or something. Imagine कीजिए वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आप वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल ज्वेलरी कलेक्शंस एंड ऑफर्स निकालते हैं। यू कैन हैव सेम वर्चुअल टूर आपके पास जो है, उसमें आप कहीं कुछ हार्ट्स छिपा कर देते हैं, हिडन हार्ट्स। A person has to go search in the virtual tour using whatever he wants because VR device है उसके पास, मोबाइल फोन है, लैपटॉप, जो भी, डजेंट मैटर, गो कीप ऑन सर्चिंग। वो खुद खोजेगा, खोजेगी, देंगे, एक दिल मिला, दो मिला, तीन मिला, 10 मिला, जितना मिला, तो कीप ऑन कमेंटिंग, आई फाउंड 10 हार्ट्स, आई फाउंड वन हार्ट इन द सिल्वर कॉर्नर। करते करते आपका वो लोग कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इंस्टाग्राम में आपका एक्टिविटी बढ़ती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे गिव यू अ चांस टू क्रिएट a certain campaign, a certain competition, some giveaways, some rewards, discount coupons, and choose a winner or something. And that competition and collaboration, we know what they are. They create a lot of buzz in business. So get people to comment and engage on Instagram live. ये भी होता है। तो ऐसे छोटे गेम्स आप प्लान कर सकते हैं एफर्टलेसली, कोई मेजर कॉस्ट नहीं होती है, इजीली आप एक कैंपेन्स यूज करके create a world where people are enjoying in your store without actually coming to your store. You be a part of their world by bringing them to your world virtually. So these were a few innovative ways and few common, you can say, sections of customers में address किए। This is not the be all and all. हर स्टोर की कहानी अलग होती है, हर स्टोर के कस्टमर्स अपने होते हैं। आप कभी कभी डिफरेंट नए नए इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं। So the question is, what is your reason for considering a 360 virtual tour for your store? यहाँ पे देखिए, योर ज्यादा बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी क्या सोच है? कि आपको लगता है कि इसकी जरूरत है, हो सकता है नीड इट। क्या आपको लगता है कि इसकी चाहत है, आई वॉन्ट इट, आई डोंट नीड इट, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पर आई वॉन्ट इट, मेरे पास होना चाहिए। और डू यू फील लाइक हैविंग इट? ज्वेलरी इज ऑल अबाउट फील लाइक हैविंग इट। आपके कस्टमर्स ज्वेलरी स्टोर में कभी भी कोई कस्टमर मजबूरी से नहीं आता है, कुछ आते हैं वो अलग मजबूरी होती है, वी डोंट टॉक अबाउट दैट। बट इन रियलिटी हर कोई ज्वेलरी स्टोर में महसूस करने आता है। यू ऑलवेज फील गुड कमिंग टू ज्वेलरी स्टोर। सो आपकी अगर नीड है, वांट है, या फील लाइक हैविंग इट है, इट डजंट मैटर, बट एज लॉन्ग एज यू पुट योर फिंगर ऑन इट कि ये मेरी वजह है, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग विद द वर्चुअल टूर्स। कैसे? कभी भी वर्चुअल टूर्स की जर्नी शुरू करेंगे, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप खुद ही इसमें एक्सपर्ट होंगे। आप ज्वेलर से, आपकी एक बहुत बड़ी दुनिया है, वर्चुअल टूर्स है, टेक्नोलॉजी, यू माइट ऑलरेडी हैव एक्सेस टू समबडी जो ये करते हैं, या फिर आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सेल प्रो के साथ कनेक्ट करेंगे या किसी के साथ भी करेंगे, स्टेप्स वही रहते हैं। आपको 3 स्टेप फॉलो करने, मैं वो बता रहा हूँ जो हम फॉलो करते हैं, दैट्स इजी फॉर मी टू स्पीक अबाउट। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है व्हेन यू थिंक ऑफ वर्चुअल टूर्स। क्यों? क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई मतलब ये नहीं कि अधूरी है, पूरी टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट ज्वेलरी,
ह्यूमन साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों चीज एक साथ अगर नहीं आती है तो फिर वो खिचड़ी बनेगी, बिजनेस नहीं होगा उसमें। तो खिचड़ी नहीं बनाने के लिए हमें इसको तरीके से जोड़ना पड़ेगा, तो बिरयानी बनेगी। लाइक हाउ इट वर्क्स आउट, फर्स्ट इज डिस्कशन। अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट, जहां पे हम आपसे डिस्कस करेंगे और वी डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका यूनिकनेस क्या है, ये समझना जरूरी है। हर स्टोर की यूनिकनेस को महसूस करना जरूरी है। एंड आपका टारगेट कस्टमर टाइप क्या है, इन तीन चीजों को बारीकी से समझने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। ये समझने में गड़बड़ी कर दिया, देखिए 360 फोटोग्राफ्स तो कोई भी एक कैमरा लेके आएगा, 4 शॉट्स लेगा, जोड़ेगा और डाल देगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी कर सकते हैं। आपको मन किया, मैं इतना सिंपल सी बात है, आप अमेजोन पे जाइए, इंस्टा 360 कैमरा ऑर्डर कीजिए, 30-40 हज़ार कैमरा आती है, कल मिल जाएगी, कल परसों आपको, आप ही 4 शॉट लेके जोड़ के डाल दीजिए, खत्म बात। अब वो करने के लिए हमको कुछ चमत्कार नहीं करना है, बट वो करने से मिलेगा क्या? बिकॉज आप ज्वेलर है, यू आर नॉट सेलिंग बुलियन। आप किलो के भाव ज्वेलरी नहीं बेचते, आप ज्वेलर, बिकॉज उस चीज में लाइफ होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। सिमिलरली आपका वर्चुअल टूर शुड हैव द सेम फील एज ए ज्वेलरी। सो ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग यूनिकनेस एंड टारगेट कस्टमर जो आपके हैं उनका टाइप, दिस स्ट्रेटेजी के लिए हम समझेंगे। देन आई एनालाइज इट पर्सनली, एंड इन एक्सेल प्रो आई पर्सनली टेक केयर ऑफ ऑल कस्टमर्स। इट्स नॉट लाइक हाँ ये कंपनी है, कुछ भी नहीं है, लाइक एवरी ज्वेलरी पीस यूनिक फॉर अस। हमारा इमोशनल बॉन्ड आपके साथ है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। दोज ऑफ यू नो मी फ्रॉम लास्ट 10-20 years ago, आपको पता है कि वी ऑलवेज कनेक्ट द बॉन्ड। अपनी पर्सनल बॉन्ड बनती है, तभी हम आपके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। सो आई क्रिएट एन अप्रोच प्लान फॉर यू, कैसे डिप्लॉय करना है और आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वर्चुअल टूर। वी कनेक्ट ऑन दैट, एंड देन ऑफ कोर्स द प्राइसिंग, टाइमलाइन एंड जो लॉजिस्टिक्स होती है वो डिस्कस करेंगे, और वो आप अप्रूव कर देंगे, सब सही है, वी ऑल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। देन वी गो टू एक्शन। एक्शन क्या है, ऑन साइट शूट होती है विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी, बिकॉज बहुत सिंपल छोटी सी कैमरा होती है। आपने देखा एक स्क्रीन पे मैंने यूज किया था छोटा सा कैमरा, एंड इट इज डन एट अ टाइम वी डोंट इवन नीड टू डिस्टर्ब कस्टमर्स, वी डू इट। देन आपसे I'll take some information, images, videos, कुछ करना हो तो इनपुट्स एक्स्ट्रा जो अंदर जाते हैं, 3D मॉडल्स कुछ होंगे वो पिकअप करेंगे आपसे, या कुछ क्रिएट करना, वी कैन डिस्कस दैट। इन सबको साथ में जोड़ के with a lot of love and attention into it, we create a wonderful 360 virtual tour for you। आप अप्रूव करेंगे, उसको लॉन्च कर देंगे। यहां तक हम आपका साथ निभाएंगे, साथ चलेंगे। लॉन्च होने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इट अलाइव, क्योंकि आप उसको महसूस करेंगे, बॉन्ड करेंगे, कस्टमर से शेयर करेंगे। वी कैन डिस्कस दैट हाउ वी कैन डू, इसे थोड़े पहले मैंने कहा था, टू कीप इट अलाइव। एंड देन आपके हर स्ट्रेटेजी में, आपका डिजिटल स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, इन हाउस सीआरएम स्ट्रेटेजी, हर एक में वर्चुअल को इनकलकेट करेंगे। चाहे आपको कियोस्क में यूज करना है, देन आई विल डिस्कस विद यू कि कियोस्क में डालना है कि हेडसेट डालना है, क्या करना है। एंड फाइनली वर्चुअल टूर देखते देखते बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, विच मीन्स आप जब स्टोर एंटर कर रहे हो, आपको महसूस हो कि मैं यहाँ पे फिजिकली स्टोर में एंटर कर रहा हूँ, but across the world my store is there everywhere, any customer can feel what I am feeling right now without physically being there. How beautiful can it be? So that was the wonderful world of virtual tours for jewelry stores. What, why, and how. I hope you enjoyed being with me today, and I presume कि आपको मेरी बातें interesting लगी और informative लगी. Short webinar में I thought I'll give an introduction, but this is the beginning. I hope मेरी बातें बहुत सिंपल थी, समझ में आई। और एक बात बिफोर वी कंटिन्यू फॉरवर्ड, नेवर गेट ओवर विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज नॉट ए मास्टर, इट्स जस्ट ए स्लेव। टेक्नोलॉजी को हम जार्गन डाल के कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। आप जो मुझे जानते हैं, आप जानते हैं कि 10 साल पहले मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग से मैंने ई लर्निंग शुरू किया, ई लर्निंग से मैं अभी वीआर में आ चुका हूँ। आई डू लॉट ऑफ वर्क ग्लोबली। इट्स ऑलवेज सिंपल, इट्स जस्ट दैट उसको ओवरवेल्म नहीं करना। हाँ, हमें ये देखना है कि हमें इसमें से क्या काम की चीज है और कैसे यूज करना है, इट वर्क्स फॉर अस। सो विद दैट नोट, it was wonderful having you with me today, and I hope you enjoyed the webinar. Have a wonderful day ahead. Thank you very much. Take care. Bye bye.